Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Adab. I hope all the friends are enjoying studying law. I have made a little bit entertaining manner so that you don't get bored while studying all the sections. In my previous videos, you might have checked. Those who have not checked, please go and check them and enjoy studying some of the acts of criminal procedure. All the acts are going to come up. In criminal procedure, we have covered Chapter 1 to Chapter 4 of CrPC 1973. Now, before moving ahead, we need to understand how these chapters are placed in CrPC. Only after understanding that we can proceed further, क्योंकि अब ये serial order में नहीं है. We cannot study them in serial order. They are all scattered in criminal procedure code. For newcomers or beginners, they have a little bit confusion. So, criminal procedure code को CrPC in short कहते हैं. We have covered Chapter 1, which is about definitions. We have covered Chapter 2, which is constitution of criminal courts. Chapter 3, powers of the courts, and we have also covered the Chapter 4, which is power of the superior police and aid to the magistrate and to the police by general public. Next is Chapter 5. Before coming to Chapter 5 and studying it, let us understand all the chapters of the Criminal Procedure Code, how they are placed and how we are going to cover them. And one thing, I'm very sure, आप इस वीडियो को 2-3 बार चलाएं. I guarantee you will learn all the chapters of Criminal Procedure Code by heart. आपको by heart हर चैप्टर याद हो जाएगा. अगर आपको चैप्टर याद हो जाएगा कि ये जैसे अरेस्ट चैप्टर 5 में है तो बेल चैप्टर 33 में है, all such things will come up to your mind and automatically the sections of those chapter will be correlated to you and you will find CrPC very easy. Those people who say CrPC बहुत मुश्किल है, come on guys, come on girls, let's kill that factor and make this thing very easy. Now, quick look at CrPC. Total 37 chapters हैं, total 484 sections हैं. Chapter 1 to Chapter 3 definitions, courts की constitution, courts की power आ जाती हैं. Chapter 4 में power of the police and aid to the magistrate we have covered. Chapter 5 and Chapter 33 are read together. Chapter 5 है arrest of the person and Chapter 33 है bail and bonds. अब CrPC को लिखते वक्त अरेस्ट को चैप्टर 5 में लिख दिया था, लेकिन प्रोविजन ऑफ द बेल्स एंड बॉन्ड्स को चैप्टर 33 में डाला गया था. लेकिन हम डेफिनेटली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू स्टडी कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया तो डेफिनेटली उसकी बेल भी होगी, उसके बॉन्ड्स भी भरने होंगे. प्रोसीजर क्या है? सो चैप्टर 5 एंड चैप्टर 33 आर रेड टुगेदर. नेक्स्ट इज चैप्टर 6 and 7. अब कोर्ट में केस भाई साहब शुरू हो चुका है, लेकिन नो वन वांट्स टू कम टू द कोर्ट. कोई भी कोर्ट में आना नहीं चाहता है, लेकिन चैप्टर 6 में प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंसेस ऑफ सच पर्संस दिए गए हैं कि उसको कंपेल करना पड़ेगा, कोर्ट में आना ही पड़ेगा. बिकॉज आपकी कंप्लेंट हुई है और आपको जवाब देना है, आप जवाबदेही हैं. नॉट ओनली दिस थिंग, कोई केस चल रहा है और उसमें आपकी किसी भी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट है जो आप सबूत दे सकते हैं या कोई किसी भी प्रकार की स्टेटमेंट दे सकते हैं, और इवन टू हेल्प द कोर्ट कि किसी प्रकार की कोई स्पेशल एडवाइस या स्पेशल कमेंट्स इज रिक्वायर्ड बाय यू. Chapter 6 says the compel appearances of persons. Chapter 7 is process to compel the production of things. अब काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, सबूत की ज़रूरत होती है, कागज़ों की ज़रूरत होती है, देखने की ज़रूरत होती है. Chapter 7 में is covered of all such things कि how to bring such things to the court. Next is Chapter 8 to Chapter 11. They are preventive provisions. प्रिवेंटिव प्रोविजंस बिफोर क्राइम होती हैं. क्राइम करने से पहले हम पहले ही सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिवेंटिव प्रोविजंस चैप्टर 8 टू चैप्टर 11 में वी विल कवर दैट. नेक्स्ट इज चैप्टर 12 टू चैप्टर 32. दे आर पुनिटिव प्रोविजंस.
पुंटिव डेफिनेटली सज़ा के तौर पे या सज़ा देने के तौर पे बनाई गई हैं, तो दे आर आफ्टर क्राइम. Chapter 33 to chapter 37 are others, miscellaneous, and yes, those who want to study, I don't need to say this thing that you should subscribe so that you never miss a subject coming up. And those who have subscribed, I would like to thank them up, and subscribers can now join WhatsApp group. The link is given below. All professionals, advocates, students who are serious about law and love the law subject can join the group. All the latest Supreme Court judgments, general knowledge, and anything regarding law notes can be exchanged over there. But only law posts are allowed. Anything else except law, the person will be removed from the group without warning. Now let's come back to studies. हमने चैप्टर 8 to 11 को प्रिवेंटिव प्रोविजंस में देखा था, विच आर बिफोर क्राइम. चैप्टर 8 कहता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर. दिस इज अंडर सेक्शन 106 टू सेक्शन 124. अब भाई किसी कोई हैबिचुअल क्रिमिनल है या किसी के बिहेवियर में एंग्विश है और पता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, सो ऐसे पर्सन से किसी भी हालात में कभी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो सिक्योरिटी के तौर पे कुछ भी ले सकती है, देयर आर्म्स और इवन कीपिंग देम इन प्रिजन और एनी अदर बॉन्ड्स, so that he may maintain peace and maintain his good behavior in a given situation. Which we'll study in details later on. Chapter 9 में बताया गया है कि maintenance of wife, children and parents is now compulsory. You cannot get rid of this thing. You cannot be greedy, you know. अफसोस की बात है कि Indians are really generous people and still इस लॉ की ज़रूरत पड़ गई है because of changing circumstances and changing scenario. So chapter 9 says you have to maintain your wife, you have to maintain children and your old parents. Don't ignore them, please. Otherwise, you will be taken up under section 125 to section 128. Chapter 10 speaks about maintenance of public order and tranquilities. It is given in section 129 to 148. बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है. यू विल एंजॉय स्टडिंग इट. ये 4 पार्ट्स में बांटा गया है. वन इज अनलॉफुल असेंबलीज एंड सेकेंड पार्ट इज पब्लिक न्यूसेंसेस. थर्ड पार्ट इज अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर. एंड फोर्थ पार्ट इज डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. आप मालिक हैं अपने घर के, अपनी ज़मीन के, लेकिन वहाँ पर आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं जिससे अड़ोस पड़ोस या डेंजर टू अदर पब्लिक, which will be studying later on in detail. Next chapter is chapter 11, preventive action of the police, and this is given in section 149 to section 153. So we have covered preventive provisions, chapter 8 to chapter 11, which is before crime. Now let's cover punitive provisions जो chapter 12 to chapter 32 में दी गई हैं, and that is after happening of the crime. Let us further divide this into two, and पहला part ये है कि chapter 12 to 27 proceedings before the trial begins में आते हैं, and chapter 28 to 32 proceedings after the trial begins. और इसमें एक jurisdiction of the court की जब बात आती है तो हम दोनों को एक एक sections निकाल लेते हैं. 13 यहाँ से निकाल लेते हैं और 31 after the proceedings में निकाल लेते हैं. बिफोर प्रोसीडिंग्स में से हमने चैप्टर 13 निकाल लिया है जो कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स बताता है, और आफ्टर द ट्रायल अगेन जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट आ जाती हैं. कब आती हैं? जब आपको
कोर्ट के केस को ट्रांसफर करना होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 31. सो चैप्टर 13 और 31 बाहर निकाल लें. 13 31, रिमेंबर दिस थिंग, 13 यहाँ से आएगा और 31 यहाँ से आएगा. 13 chapter and chapter 31 is taken out, and then we will get the real picture about criminal procedure code, how the chapters are scattered and from where you can find what. Now after taking this out, let's cover the chapter 12 to 27 first. जनरल प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं चैप्टर 12 टू चैप्टर 21 में. स्पेशल प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं चैप्टर 21A, which has been inserted by Amendment Act of 2006. प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर इसमें डाला गया था. चैप्टर 27 is about judgments. अब जनरल प्रोसीडिंग्स में बिफोर ट्रायल कवर हो जाते हैं चैप्टर 12 टू 17, एंड ड्यूरिंग द ट्रायल्स चैप्टर 18 टू चैप्टर 21 are covered. So let's understand and that the placements of these chapters, and we have covered chapter 8 to chapter 11. We have just seen chapter 12 to chapter 32, and now let's do a revision of all the chapters with the sections, so that whenever you play this video you do not miss any chapter or the sections of criminal procedure code. You don't need even to open the book, और आपको सारे chapters and their sections are remembered by heart. So girls and guys, let's be serious. May I have your attention please? Remove all the distractions and let's revise CrPC. All chapters, all sections आज ही याद करने हैं, and this is all possible only if you are going to cooperate with me. So समझ लीजिए कि आप CrPC हैं. So Mr. CrPC or Miss CrPC, if you are a female, please can you tell me how can you make this society, your country India, a crime-free place to live in? डेफिनेटली आईपीसी में सारी पनिशमेंट्स बताई गई हैं. आईपीसी 1860 और उसकी पनिशमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिस्टर सीआरपीसी व्हाट आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू मेक द कोड्स. डेफिनेटली आपने बनाई हैं. इज गिवन इन चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड देयर ऑफिसेस, सेक्शन 6 टू सेक्शन 25A. अब कोड्स बना दी हैं, यू हैव मेड द कोड्स, एंड नाउ व्हाट यू आर गोना डू, यू आर गोइंग टू गिव देम पावर्स. चैप्टर 3 deals with powers of the code, section 26 to section 35. After giving the powers to the courts, how are you going to function? Definitely you need people, your general public, to come forward, the citizens to come forward and help the police and the magistrate, which is given in chapter 4. Then chapter 4 came into existence, the power of the police, senior police officers and aid to the magistrate, which are covered in section 36 to section 40. Definitely आपने Mr. CrPC, you have made the courts, you have made the police and magistrates and given the powers to them. What are you going to do then? You're first going to do that all the offenders be brought to the court and make them liable for their acts, wrong acts, and punish them for disturbing the peace of the society. So chapter 5 came existence by arresting of person, which is given in section 41 to section 60. So Mr. CrPC, you have made the courts, you have made the police and the magistrates power given in chapter 4. You have even arrested the people who have committed the offenses. But there are also such crimes for which the arrest is not compulsory, and they are just asked to come to the courts कि why action should not be taken against you, क्योंकि आपने कोई ऐसा act किया है, या omission of act which is given in subsection N of section 2 अगर आपको याद हो. in chapter 1 हमने in definitions हमने cover किया है regarding what is offense. So there are certain people that who do not appear to the court, do not come to the courts, and certain other people who run away, और वो छुप जाते हैं पुलिस से, अरेस्ट से, या कोर्ट में आने से मना कर देते हैं. What are you going to do, Mr. CrPC? Definitely you made another chapter, chapter number
6. The process to compel appearances given in section 61 to section 90, that how you are going to make them appear by attaching their property. This is further divided into 4 parts. Pehla part A है, which is called summons, how you serve them. B part is warrant of arrest. C part is proclamation of attachment. D part is other rules regarding the processes. Now you have made very intelligently to bring persons to the court, लेकिन सबूतों की ज़रूरत होती है, चीज़ों की ज़रूरत होती है, and even for the knowledge of the court or the case to proceed, we need certain things. अब definitely जो offender है वो नहीं चाहेगा कि भैया मेरे खिलाफ जो है कोई चीज़ कोर्ट में पहुँचे और मैं हार जाऊँ या मुझे punishment मिले. So definitely he is going to do his best. So what are you going to do, Mr. Criminal? Okay, so you are going to make them compel to bring their production of things, which is given in next chapter, chapter 7, and it is given under section 91 to section 105. It is further divided into 4 parts. A. Summons to produce. B. Search warrant. C. Journal provisions relating to searches, and D is the miscellaneous provisions. So when CrPC 1973 was made, उन्होंने से एक चीज़ रह गई थी, और अगर कोई चीज़ रह गई थी, so what CrPC are you going to do? Okay, you are going to make an amendment act and insert that thing. Chapter 7A says that thing, reciprocal arrangements and attachment of property, which is given in section 105A to section 105L. This is inserted by the Amendment of Criminal Procedure Code in 1993. Now there are some trouble creator of the society, बार वो trouble create करते हैं, and whenever there is an occasion, festival, celebrations or some visit of a dignitaries, functions, वो कुछ ना कुछ अब trouble create करते ही हैं. एक मैं very funny example ले लेता हूँ यहाँ पर कि Valentine Day मनाया जाता है. There are some organization which oppose this celebrations, and भाई administration को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि why don't you take security and for keeping peace and good behavior. आपको chapter 8 दिया है ना under section 106 to section 124. I think अब आपको ये याद हो जाएगा कि chapter 8 security for keeping peace and good behavior दिया गया है, and I would like to personally request all these organizations, people जो के form करके हैं कि let the people celebrate Valentine Day who are celebrating in a decent manner. चलो भाई, आपने Valentine Day मना लिया है, शादी हो गई है. Okay, for those जिनकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी नहीं हुई है तो डेफिनेटली अरेंज मैरिज के थ्रू शादी हो गई है. ओके, यू हैव किड्स, यू हैव ओल्ड पेरेंट्स, और अगर आपकी आवारागर्दी की आदतें नहीं गई हैं, आप पैसा उड़ा रहे हो, अपनी मेंटेन नहीं कर रहे हो फैमिली को, सो मिस्टर CrPC, डू यू हैव एनीथिंग फॉर देम? Definitely, chapter number 9, order to maintain wife, children and parents, which is given in section 125 to section 128. So okay friends, अब हमने कवर कर लिया है घर के अंदर की बातें कि भाई yes, we are having a law which definitely protects inside the house people, like your wife, your children, your parents, old parents, definitely. अब बात कर लेते हैं कि outside the house डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ सफाई करने के लिए बनाया गया है, बट डू नॉट फॉरगेट दैट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आर डीलिंग विद ऑल दोज एक्ट्स एंड ओमिशन ऑफ एक्ट्स विच इफेक्ट्स योर नेबर्स. चैप्टर 10 इसी के लिए बनाया गया है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटीज. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आपने घर बना लिया है, आपका ज़मीन है, आपकी मर्जी जो मर्जी करें, लेकिन उसके ऊपर आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं जिससे डेंजर हो टू द सोसाइटी. गैस प्लांट्स बना लिया है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे बहुत सारी प्रोटेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस और अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी जिससे सोसाइटी प्रोटेक्टेड रहे. लेट्स कम बैक टू द चैप्टर 10 विच इज़ बीन मेड बाय मिस्टर CrPC. It is divided into again 4 parts. A. Unlawful assemblies. B. Public nuisances. C. Covers urgent cases of nuisance or apprehended danger. D. Covers disputes as to immovable properties.
So all these are when the complaint is made to the court, magistrate order पर ये पुलिस एक्ट करती है. लेकिन what about those urgent cases जहाँ पर the society, the administration cannot wait for someone to make a complaint? Mr. CrPC has answer for that as well. Chapter number 11 इसी के लिए बनाया गया to prevention action of the police. Section 149 to section 153 says about this thing. Next is, it is not just the courts where a person can approach, they can approach the police as well, and chapter 12 speaks about that. Information to the police and their power to investigate. जो कंप्लेंट कोर्ट को की गई हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती हैं. दोज आर गिवन इन चैप्टर नंबर 12, सेक्शन 154 to 176 डील्स विद इट. एंड मिस्टर CrPC, व्हाट अबाउट the police not doing properly all such things, or the court thinks they can do it better, or the administration or the people says कि please आप investigation कराइए. So उसकी provision chapter number 13, jurisdiction of the criminal courts in inquiries and trials, section 177 to 189 में दिया गया है कि even the criminal courts can inquire and do the trials. So आपने बहुत सुना होगा कि इस केस में IO कौन है. IO is investigation officer and he can be of any designation. कोई भी investigation officer हो सकता है, even an superintendent of police, SP, DSP, SSP, ASP, AGP, anyone can be an IO in a case. Now the question comes when the police refuses to register an FIR. उसके कई कारण हो सकते हैं कि उनको लगे कि शायद ये तो फेक कंप्लेंट कर रहा है या हैबिचुअल बंदा है, या ये कंप्लेंट किसी ऐसे बंदे के खिलाफ कर रहा है जिससे पुलिस अरेस्ट या उसके खिलाफ एक्शन या काम नहीं करना चाहती है. देयर मे बी न्यूमरस रीजंस के पॉलिटिकल प्रेशर है. आई एम सॉरी, विदाउट ब्लेमिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, इन जनरल कोर्स आई एम स्पीकिंग दिस अबाउट, एंड टू किड्स हु कैन लर्न सच थिंग्स कि मे बी FIR रजिस्टर क्यों नहीं की गई है. सो मिस्टर CrPC, आपने इतना कुछ बना लिया, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? चैप्टर नंबर 15 दिया है आपने, कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट. वेरी गुड. 200 and 203 सेक्शंस जो हैं इसमें डील करते हैं कि अगर आपकी FIR नहीं हो रही है तो आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 200 and 203 ऑफ CrPC. अब सारी कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, पुलिस को हो गई है, नहीं की है अगर उन्होंने तो मजिस्ट्रेट को होगी. नाउ व्हाट यू गोना डू? यू आर गोइंग टू मेक अनदर चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, commencement of the proceedings before the magistrate. This is given in section 204 and section 210. अब ये कंप्लेंट हो गई है, रजिस्टर हो गई है. मिस्टर CrPC, व्हाट्स नेक्स्ट? चैप्टर नंबर 17, द चार्जेस. डेफिनेटली जो कंप्लेंट हुई है उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, एंड दैट इज गिवन इन सेक्शन 211 एंड 224. मिस्टर CrPC, अब ये भी बता दीजिए कि भाई अब ये जो चार्जेस लग गए हैं, कंप्लेंट हो गई है, ये किस कोर्ट में चलेंगे? ओके, यू हैव बिगन फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन. चैप्टर नंबर 18, सेक्शन 225 to 237. Then Mr. CrPC, what have you shown us? Chapter number 19, trial of warrant cases by a magistrate. This is divided into 3 parts. A, cases initiated on a police report. B says about cases initiated otherwise than on a police report. And third part, C says conclusion of the trial. So Mr. CrPC, ये तो आपने वारंट केसेस के बारे में बता दिया है. हमारे पास समन केसेस भी होते हैं. ओके, चैप्टर नंबर 20, यू हैव गिवन ट्रायल ऑफ समन केसेस व्हिच इज गिवन इन सेक्शन 251 टू सेक्शन 259. सर, छोटे मोटे क्राइम भी होते हैं, उसके बारे में बता दीजिए. ओके, वी गॉट अनदर थिंग फ्रॉम मिस्टर CrPC, चैप्टर नंबर 21, समरी ट्रायल्स. ये सिर्फ वो केसेस होते हैं जिनमें या तो छोटा मोटा फाइन हो और फाइन ना देने के कारण 6 months की इम्प्रिजनमेंट दे, या एज द जुडिशियल ऑफिसर में थिंक जूनियर डिवीजन होता था, लेकिन पुराने ज़माने में सेकंड क्लास ऑफ जुडिशियल ऑफिसर कहा जाता था. दोज हु यूज्ड टू कंडक्ट समरी ट्रायल्स इन सेक्शन 260 टू सेक्शन 265. मिस्टर CrPC, जब ये कोड बना था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में, आप एक चीज भूल गए, प्ली बार्गेनिंग. अब क्या करेंगे?
ओके, यू कैन अमेंड इट एंड 2006 में आपने अमेंडमेंट की है, चैप्टर 21A डाल दिया है प्ली बार्गेनिंग का, विच डील्स इन सेक्शन 265A टू सेक्शन 265L। वेरी गुड, थैंक यू। अब प्ली बार्गेनिंग हो सकती है। मिस्टर CrPC, कैन यू टेल मी अबाउट दोज पीपल जो आपने जेल में पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं और उनको कोर्ट में पेश करना है? इट इज, वी हैव बीन टॉकिंग ओनली अबाउट दोज पीपल हु आर इन द सोसाइटी। So Mr. CrPC has given us chapter number 22 for attendance of persons confined or detained in prisons. Section 266, section 271 deals with all those peoples to be brought to the court. सर अब इनकी इंक्वायरी और ट्रायल का जो चलेगा, एविडेंस देने का प्रोसेस, वो भी बता दीजिए। So Mr. CrPC have made a provision in chapter number 23, evidences in inquiries and trials. This is further divided into two parts. A says the mode of taking recording evidences, and B part says commissions for the examination of such witnesses. All this is covered in section 272 to 299. इसके साथ ही CrPC ने चैप्टर नंबर 24 दिया है फॉर जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, विच इज इन सेक्शन 300 टू सेक्शन 327. Now Mr. CrPC, what have you given? Chapter number 25, provision as to accused persons of unsound mind. अच्छा, इनको आप भूल गए थे इसलिए आपने यहाँ पर डाल दिया है. See, I told you the placements of the chapters are really scattered. Anyway, we read about those people who are of unsound mind in chapter number 25. They are deal in section 328 to 339. Sir, हमने बहुत बार देखा गया है कि if the accused is वेल ऑफ, अमीर है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, he might misuse his powers and that could affect the administration of justice. Okay, you brought chapter number 26, provision as to offenses affecting administration of justice. Section 340 and 352 deal with that. सब कुछ हो गया है, अब आप क्या करेंगे? Next comes chapter 27, the judgment. Section 353 to 365 deal with judgment. So CrPC after giving the judgment, अब हो सकता है कि judgment जो है lower court ने death की दे दी हो. So chapter number 38 comes into existence, that submission of death sentences for confirmation is given in section 366 to 371. If you remember, Court of Session has the power to give death sentences, लेकिन that can be implemented only by the High Court, confirm करेगा उसको, which is given in chapter number 28, section 366 to 371. सर, अगर आपको पनिशमेंट हो गई है, लोगों को लगता है कि ये गलत हुई है, नॉट ओनली द डेथ और एनी अदर पनिशमेंट्स, देयर इज प्रोविजन गिवन बाय CrPC. चैप्टर नंबर 29 कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. आप अपील कर सकते हैं. अपील्स आर गिवन इन सेक्शन 372 टू 394. अगर सर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं ड्यूरिंग द ट्रायल, द कोर्ट्स कैन देमसेल्फ और ऑन रिक्वेस्ट, चैप्टर नंबर 30 सेज रेफर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. द रेफरेंसेस और रिविजन्स आर गिवन इन सेक्शन 395 टू सेक्शन 405. Now since the jurisdiction of the court is where the offence has been committed, या जिस एरिया में उसकी jurisdiction है, अगर वहाँ पर influential person के अगेंस्ट कंप्लेंट है, पुलिस के अगेंस्ट ही है, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट है, सरकार के खिलाफ है, पॉलिटिशियन के खिलाफ है, और आपको डर लगता है कि ये यहाँ पर मेरे को सेफली केस चलने नहीं देंगे, यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस. चैप्टर नंबर 31 कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. कोर्ट्स अपने आप भी इसको ट्रांसफर कर सकती है. इन सच सर्कमस्टांसेस जरूरी नहीं है कि भाई एप्लीकेंट और द डिफेंडेंट जो है वो ही कंप्लेंट करे कि भाई मेरा केस ट्रांसफर किया जाए. सेक्शन 406 टू सेक्शन 412 डील विद सच केसेस. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 32, इट डील्स विद द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, एग्जीक्यूशंस, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस. सेक्शन 413 टू 435 ये 5 पार्ट्स में बांटा हुआ है. A deals with death sentences, B deal with imprisonments, C deal with levy of fine, and D deals with general provisions regarding execution. E part deals with suspension, remission and commutation of such sentences.
नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 33 रिगार्डिंग बेल एंड बॉन्ड्स। ओ माय गॉड, सीआरपीसी को अब याद आया है कि ये हमने बेल एंड बॉन्ड की प्रोविजन देनी थी आफ्टर इट हैज़ बीन अरेस्टेड इन चैप्टर नंबर 5। तभी मैं कहूँ कि भाई जेल में पड़े पड़े लोगों को साल बीत जाते हैं और बेल बहुत देर से होती है, क्योंकि भैया बेल तो चैप्टर नंबर 33 में दी है, इतनी देर बाद दी है। एनीवे, सीआरपीसी को याद आ गया कि भैया अगर अरेस्ट किया गया है पर्सन को तो उसकी बेल एंड बॉन्ड उसको बाहर निकालने का भी प्रोविजन करना है। जरूरी नहीं है कि द पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड इज एन क्रिमिनल, ही मे बी एन फॉल्सली एक्यूज्ड पर्सन। एनीवे, आपने अब नेक्स्ट क्या दिया है, चैप्टर नंबर 34। ओह माय गॉड, अब आपको याद आ रहा है कि भैया अगर उसकी प्रॉपर्टी अगर हमने ली है तो उसको भी डिस्पोज करनी है। एंड चलो याद आ गया, चैप्टर नंबर 34 डील्स विद डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी जो खराब हो रही है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस। सेक्शन नंबर 451 एंड 459 डील विद डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। अब नो वन इज परफेक्ट, सो मिस्टर सीआरपीसी और मिस सीआरपीसी, आप भी परफेक्ट नहीं हैं, गलतियां तो आपसे भी हो सकती हैं। So irregular proceedings are given in chapter number 35, section 460 and 466 deals with such things. Next chapter comes chapter number 36, limitations for taking cognizance of certain offenses. Section number 467 to 473 deals with such cases. एंड जो कुछ रह गया है थोड़ा बहुत, दे कम्स अंडर चैप्टर नंबर 37 मिसलेनियस, सेक्शन 474 to 484।